So hello everyone, this is Akshay here and welcome back to the another great day of our GFG POTD streak। आज के क्वेश्चन का नाम है यार, मतलब बेसिक क्वेश्चन है यार, क्यू रिवर्सल करना है हमें। तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है। अगर हमारे पास कोई क्यू दे रखा है, राइट, तो क्यू में क्या ऑर्डर होता है यार, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। जो पहले आया वही पहले बाहर भी जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आप इमेजिन कर सकते हो कि एक लिफ्ट है, वहाँ पे लोग खड़े हैं, जो पहले आता है वही लिफ्ट से ऊपर लिफ्ट में जाता है और उसको जहाँ जिस फ्लोर पे जाना है वो जा सकता है, राइट। तो मैं यहाँ पहले से 1 2 3 है, राइट। तो अगर मैं इसमें से एलिमेंट्स को पॉप करता हूँ जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए, तो कौन से एलिमेंट तो कौन से ऑर्डर में पॉप होगा? तो डेफिनेटली 1 2 एंड देन 3 ये ऑर्डर होगा, राइट। हमें क्या चाहिए? इसको रिवर्स करना है। तो आउटपुट हमारा जो होना चाहिए ये इसका रिवर्सल, दैट इज 3 to 1 होना चाहिए, ठीक है। तो रिवर्सल ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो फीफो का जस्ट रिवर्स देता है हमें? लास्ट इन फर्स्ट आउट। वो कहाँ से मिलेगा मेरे को? स्टैक से, राइट। बेस्ट वे है कि यहाँ पे एक स्टैक बना लो, ठीक है। जो भी यहाँ पे जो 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 इनका ऑर्डर है उसी ऑर्डर में स्टैक में डाल दो, तो सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी रिवर्स हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ से निकल सबसे पहले 1 आएगा, तो 1 2 एंड 3। अब यहाँ ऐड कर लो, ऐड इन स्टैक, और यहाँ से क्या कर लो? पॉप, पॉप फ्रॉम स्टैक, और एक नए क्यू में स्टोर करा लो। तो पॉप करोगे देन यू विल गेट 3। सबसे पहले 3 यहाँ आ गया, देन 2 एंड देन 1। तो डेफिनेटली ये हमारा आंसर है, राइट। सो दिस विल बी आर व्हाट टू से ब्रूट फोर्स, और हाँ एक टेक्निक, मेथड 1 कह सकते हो, ठीक है। जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? ओ ऑफ एन, एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी आल्सो बी ओ ऑफ एन, क्योंकि हम एक ऑक्सिलरी स्टैक यूज कर रहे हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन क्योंकि हम 2 बार ट्रैवर्सल करेंगे फॉर द एंटायर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस क्यू one time, and then the second time we do traversal for the entire ones present in this stack, and then we finally have the output. So that is it. Please pause this video here. Pause this video here now, and then continue with the code in your code editor, and then we'll resume ahead. तो ये रहा अपना जावा का कोड, इसे तुरंत से सबमिट कर देते हैं, देन वी विल सी द सी प्लस कोड एज वेल। तो ग्रेट, ये क्वेश्चन हो गया। अगेन मेरे को इस क्वेश्चन के पॉइंट्स नहीं मिले हैं, ऑलरेडी हैव सॉल्व्ड दिस इन माय सीजन, ठीक है। Okay, the same code I have written here in C++ as well. Let us hit the submit button for this code and let us see. ग्रेट, सी प्लस कोड का भी सबमिशन हो गया है। तो कल जो क्वेश्चन था यार, कल हमारे क्वेश्चन पूछा था विदाउट दी स्पेस। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या इसमें? कुछ विदाउट यूजिंग द स्पेस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। बट वन थिंग वी कैन डू इज दैट इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस स्टैक वी कैन ऑल्सो यूज द रिकर्सिव स्टैक, राइट। तो हम इस कोड, इस पर्टिकुलर अप्रोच को रिकर्जन से भी कर सकते हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं? सेम, एग्जैक्ट सेम ही रहेगा जैसे हमने कल किया था। हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फंक्शन होगा जिसमें क्यू वो ले रहा होगा एज अ पैरामीटर। देन व्हेन वी हैव टू स्टॉप, जब हम सारे एलिमेंट्स को प्रोसेस कर लेंगे, सो मैं यहाँ पे एक बेस केस लिख दूंगा, इफ क्यू डॉट साइज इक्वल्स टू 0 देन यू नीड टू स्टॉप द रिकर्जन। सो फॉर स्टॉपिंग द रिकर्जन व्हाट यू कैन राइट, जस्ट रिटर्न, करेक्ट। दिस वुड बी द बेस केस। देन हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स को हमें स्टोर भी कराना होगा, राइट। सो हम कहेंगे int x इज इक्वल्स टू क्यू डॉट what to say, pole or front. In Java, what the method do we use to call? So हम यहाँ पे we can use the pole method. So we'll just store this particular x and then we'll recursively call this function again. So मैं यहाँ पे वापस से function of q call कर दूंगा, and then at the last thing that whatever at each and every level जो भी recursion call ने आपको x को store किया है, उसे जब ये parent call पे वापस जाएगा तो हमें उस element को push भी करना होगा, right? So I will say q dot push or q dot add x. And that is it. Let me show you a diagram and it would be more clear for you guys. But it is highly encouraged to pause this video and do the diagram of this code by yourself so that you can also learn yourself. ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ क्यू होगा। तो करेंटली इस क्यू में ये सारे वैल्यू स्टोर है, एंड देन व्हाट विल हैपन, अभी क्यू का साइज 0 नहीं है तो x इक्वल्स टू 1 इसमें स्टोर हो जाएगा, एंड देन वी विल हैव अनदर लाइन ऑफ कोड दैट विल अगेन रिकर्सिवली कॉल दिस फंक्शन फॉर द रिमेनिंग क्यू। इस क्यू में एलिमेंट्स कौन से प्रेजेंट है अभी? 1 नहीं, 1 तो निकाल दिया हमने, राइट। तो इस क्यू में एलिमेंट प्रेजेंट है 2, 3, राइट। एंड देयर इज वन लास्ट स्टेप एज वेल, दैट इज टू पुश। बट ये तभी काम होगा जब हमारे पास इस फंक्शन का कॉल बैक हमारे पास आएगा, राइट। तो अगेन सिंस इट हैज द रिकर्सिवली कॉल द फंक्शन, सो आई विल अगेन see what the function is saying. So I will call the function of q, and what is the first step? That is the queue is empty, so it is not. What's the second step? That you need to store the you need to store the front element, or to say the top element of the queue. So x equals to 2, and then now the queue here has the element 3, and then it will again recursively call for this particular queue. And there is one last step again, but that would be done only when the function call will get back. Okay, so now here again we will store the top element of the queue, that is 3, and then again we will call for the function of queue. But now if you see that this is an empty queue, right, and it will hit the base condition, so there is one step here as well.
which will be completed once we get the call back from the recursion. So now it will hit the base condition. It will say that my queue is empty now, that is size equals to 0. So what it will say, you need to return. So I will return, and now it is the time that I will complete the third line of the code, right, जो रिकर्जन के बाद लिखा गया था. तो यहाँ पे क्या बोला था, q डॉट पुश x, मतलब 3 को पुश करना है. सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास जो q होगा उसमें हम 3 पुश कर देंगे. देन आई विल अगेन गिव द कॉल बैक टू माई पेरेंट कॉल, और यहाँ पे क्या q डॉट पुश 2 है, राइट. तो मैं यहाँ पे 3,2 पुश कर दिया. देन अगेन द कॉल बैक गोज बैक टू द पेरेंट कॉल, और यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 था जो हमने वापस से पुश करना है, तो 3,2,1, and again it goes back to the parent call. अब यहाँ पे parent कोई है नहीं, so here the recursion will stop, the recursion will end, and now you can see that the final queue that you are having with the elements are 3,2,1. अगर आप देखो तो ये actually में क्या है, given queue का reverse हो गया है, right, given queue का reversal है. So that is it. Please pause this video here and try to code this approach in your Java and C++ editor as well, and then we'll resume again. Okay, so that's the code in C++. I don't think the code walkthrough is necessary now because we have seen and dry run each step in our pseudocode. So that is it. Yeah. So what is the time complexity? That we are visiting each and every element once, right? If you see this thing that we first visited x equals to 1, x equals to 2, and x equals to, that is, we are visiting each and every element. So it would be O of n as the time complexity. What would be the space complexity? That which we are storing n recursive calls, that is the number of elements in the recursive call, and then we are returning one by one, and at the last step that we are pushing the current element that is stored in this reference variable x, right. तो अगर आप recursive call को देखो तो सबसे पहले क्या हुआ यार, x equals to 1 स्टोर हुआ, उसमें x equals to 2 स्टोर हुआ, x equals to 3 स्टोर हुआ. एंड recursive call कैसे स्टोर करता है, स्टैक में स्टोर करता है, राइट, क्योंकि जब वो पेरेंट कॉल के पास वापस आए तो जो लास्ट इन एलिमेंट है वही प्रोसेस होना चाहिए, राइट. So it then first pushed 3, then it pushed 2, and then pushed 1 to the current queue, and we return that queue, right. So it would be again O of n as the space complexity as well. Only difference in method 1 method 2 is कि हमने उसमें explicitly stack use किया, like code करके, वहाँ पे recursion use किया second method में जहाँ पे stack inbuilt use हो रहा था. Let's hit the submit button and verify. तो great, ये code भी submit हो गया है. आप Java का code देख लेते हैं. So here goes the Java code. Is the same code that if the queue got empty, you need to return, else store the particular front element for each and every call, and then at the last we just push the particular elements from the recursive call stack to our original queue, and that is it. Let us end this video here, and then we'll meet again in the tomorrow's POTD streak of day 263. Till then, keep learning, keep growing. Bye bye, and take care, guys. And there are a few shout outs I need to make, but we are already at the end of the video, so let me do that task for tomorrow. Okay, so meet you guys tomorrow in the tomorrow streak. So till then, keep learning, keep growing. Bye bye, and take care, guys.